lecture was about mathematical induction, and today we will do few more examples on mathematical induction. So mathematical induction, what was the principle? Just a quick recap. Mathematical induction, it's a quite powerful tool for proving theorems, proving results. इसमें जो मेन चीज है, we exploit the well ordered properties of property of our domain set. जो हमारा डोमेन सेट होता है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्लेम इस सेट के लिए, इन नंबर्स के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए हमारा क्लेम वैलिड है, ट्रू है. That set should be well ordered. और well order का मतलब है कि जो पैटर्न शुरू में है वही पैटर्न थ्रू आउट पूरे डोमेन सेट में वही चलेगा. सो अगर सर्टेन गैप है या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग गैप या कुछ इस तरह की चीज है, तो वो थ्रू आउट एक ही पैटर्न पे चलेगी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर आपको पैटर्न पता है डोमेन सेट का, सो अगर आप कहीं पे खड़े हैं दरमियान में डोमेन सेट के अंदर, सो इफ आई टेल यू वन नंबर, सो यू शुड बी एबल टू टेल मी द नेक्स्ट नंबर कि अच्छा nth नंबर ये है तो इससे अगला नंबर कौन सा होगा, because we know the pattern is well defined, और वो पैटर्न हमेशा मेंटेन रहता है, कभी चेंज नहीं होता. देयर इज नो अनएक्सपेक्टेंसी. एक डिटर्मिनिस्टिक किस्म की चीज हमारे पास इन प्रॉब्लम्स में जो हम कर रहे हैं उसमें है. सो मैथमेटिकल इंडक्शन में the procedure follows two major steps. First is called base step and the next is called inductive step. So it was like base step में हम जो भी हमारा डोमेन सेट गिवन है उसके पहले एलिमेंट के लिए शो करते हैं कि रिजल्ट वैलिड है. In certain cases, in certain problems, we have to show it for more than one base case. एक से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए जो शुरू के हैं उनके लिए हम शो करते हैं, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं उसके लिए हम सिर्फ एक बेस केस ही शो करेंगे. वन बेस केस इज सफिशिएंट टू शो. एक से ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे. although we can use as many base cases as we want, but one base case is sufficient. So उसके बाद हम कहते हैं कि अगर इंडक्टिव स्टेप में we make a hypothesis. Suppose our claim is true for certain value of k. So अगर k के लिए दुरुस्त है, k के लिए हम मान लेते हैं this is our hypothesis. So remember implication, अगर hypothesis true हो तो conclusion भी true होना चाहिए. So we say कि हमारा hypothesis ये है कि claim is true for n is equal to k. Then we have to make a conclusion that claim is also true for k plus 1, n is equal to k plus 1. So that we need to show. वो हमें प्रूफ करना होता है. हमें जो प्रूफ के स्टेप्स हैं, it could be either direct proof, it could be indirect proof, whatever. Most of the time over here in these examples we are doing direct proof. तो वो हमें शो करना होता है कि p of k से अगर हम स्टार्ट हो अपने hypothesis से, तो p of k plus 1 भी वैलिड होगा. p is our statement, our claim. तो अगर क्लेम k के लिए ट्रू है तो फिर k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा. k plus 1 is just a step from k to next step. I should not say k plus 1, I should say next step. अगर तो gap between numbers is 1, तो k के बाद next number should be k plus 1. अगर gap 2 का है, जैसे even numbers में 2 का gap होता है या odd numbers के लिए 2 का gap होता है. If we want to prove some results for even numbers or odd numbers, तो k के बाद हमें number लेना पड़ेगा k plus 2 का जो गैप है. या अगर किसी प्रॉब्लम में 5 का गैप है, so we have to take k plus 5 and so on. So it depends कि आपका डोमेन सेट क्या है, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. So इसमें हमने we did a number of examples. Examples में we showed like base case and then hypothesis and inductive steps. So we did this equality example. It's like kind of identity. Right hand side is equal to left hand side. So sum of us n odd integer is equal to n into n plus 1 divided by 2. This is well known formula. इसको हम डिफरेंट तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं, so we will prove it by mathematical induction. So ये इसको हमने प्रूव किया मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए लास्ट क्लास में कि बेस केस n is equal to 1, एक ही odd integer है, so 1 and right hand side is also 1 into 1 plus 1 divided by 2.
So left hand side is equal to right hand side, and then we make a hypothesis. Suppose the claim is true for k, then we have to show that it's true for k plus 1 as well. So k के लिए दुरुस्त है तो k plus 1 के लिए दुरुस्त होना चाहिए, we have to show it. So we sum first k plus 1 integers. उसमें अच्छा जहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वी नीड टू यूज इंफॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि इंडक्टिव स्टेप हमारा है ही ये कि p ऑफ k implies p of k plus 1. सो p of k हमारा हाइपोथेसिस है, p of k plus 1 जो हम अब शो करने जा रहे हैं. सो हमें p of k की इंफॉर्मेशन यूज करनी है टू शो फॉर p of k plus 1. सो हाइपोथेसिस को हमने यूज करना है. हाइपोथेसिस इज फर्स्ट k एलिमेंट फर्स्ट k इंटीजर सम इज k into k plus 1 divided by 2. सो इसमें जो k plus 1 इंटीजर्स हैं, इसके अंदर जो पहले k इंटीजर्स हैं उसका सम हमें हाइपोथेसिस से मालूम है, इट्स k into k plus 1 divided by 2, and then we add plus k plus 1, और फिर simple algebraic manipulation से we showed कि the claim is true for n is equal to k plus 1. ये हमने last time किया था. Similarly we did another example, the sum of powers of 2 for first n powers. We start from n is equal to 0. n is equal to 0 से n तक 2 की पावर्स को अगर हम सम करें, so this is 2 raised by n plus 1 minus 1. So again we showed it for the base case. बेस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो बेस केस हमारा n is equal to 0 से स्टार्ट होगा. So be careful for the domain set. Domain set हमें क्या गिवन है, we have to be very much careful for this thing. So इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर है, we have to start from 0. So 2 raised by 0 is 1. So left hand side is 1 and right hand side is 2 raised by 0 plus 1, which is 2. 2 raised by 1 is 2, and then minus 1. So this also become 1. So left hand side is same as right hand side. And then we say, suppose the given claim it is true for n is equal to k. So n is equal to k के लिए दुरुस्त है कि पहले k 2 की k powers का sum, so it should be 2 raised by k plus 1. Then we have to show it for n is equal to k plus 1 as well. कि अगर हम एक और पावर ऐड कर दें, नेक्स्ट पावर, so ये क्या होगा, हमें पहली k powers का sum हाइपोथेसिस से मालूम है. So that is 2 raised by k plus 1 minus 1, और उसके बाद हम फिर 2 raised by k plus 1 ऐड करें. So 2 raised by k plus 1 और 2 raised by k plus 1 ऐड होके 2 times 2 raised by k plus 1 हो गया. ठीक है, एक सी चीजें हैं तो दोनों ऐड हो रही हैं. So it means we can write it down 2 times 2 raised by k plus 1. बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 raised by 1 और 2 raised by k plus 1. So this is 2 raised by k plus 2 minus 1. So which is actually same as 2 raised by n plus 1 for n is equal to k plus 1. So the claim is valid. This we did last time. Third example, it was quite interesting that we are not given the conjecture. We have to formulate the conjecture. हमें statement, claim, formula नहीं दिया गया, हमें formula खुद से बनाना है. We have to explore it. We have to observe. So claim क्या है कि जो आपके पास पहले odd n odd integers हैं, उनका sum जो है that is equal to, we don't know, we have to find it out. So first n positive odd integers. So हम देखते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, एक odd integer है, तो एक odd integer is जो भी हमारा पहला odd integer है which is 1, so that is equal to 1. So if n is equal to 2, so that means we have two odd integers. 1 plus 3 is equal to 4. If n is equal to 3, then we have 1 plus 3 plus 5, so that is equal to 9. If we have 4 odd integers, then 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16. पांचवा भी अगर हमारे पास हो तो we will add 9 into it, so we'll get 25. So we observe that summation is equal to n square. जब n की वैल्यू 1 थी, sum is 1. So 1 square is 1, n is 2, दो odd integers हमारे पास आ रहे हैं, so sum is 4, and n square, 2 square is 4. So n is equal to 3, we get 3 square, 9. n is equal to 4, we get 4 square, 16. So it means we can say कि जो पहले हमारे पास n odd integer है, इनका sum n square के बराबर होगा. So n odd integer, so nth odd integer is 2n minus 1. अगर पहला odd integer हमारे पास 1 है तो n की वैल्यू 1 हो. 2n plus 1 हम नहीं कर सकते because if n is 1 then 2n plus 1 becomes 3. So it's better to use 2n minus 1. So 2n minus 1, first odd integer is 1, second odd integer is 3,
2 into 2 minus 1, so and so on. So nth odd integer is 2n minus 1. So sum of first n odd integers is equal to n square. ये तो हमारे पास एक कंजेक्चर बन गया, हमने एक अपनी ऑब्जर्वेशन से ये कंजेक्चर बना लिया. सो समवन में से कि ठीक है आपके पहले 4 या 5 या 10 ऑड इंटीजर का सम तो n स्क्वायर आ रहा है. वी डोंट नो अगर हमारे पास 1 मिलियन ऑड इंटीजर आ जाए तो बिहेवियर चेंज हो जाए. सो वी नीड टू प्रूव इट कि हमारा जो कंजेक्चर है इट्स जनरलाइज्ड. सो लेट्स सी. सो बेस केस जो हमारे पास ये लिखे हुए, दीज आर ऑल बेस केसेस कि एक ऑड इंटीजर है सम इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज 1. दो के लिए 4. सो बेस केस वी हैव already we have it here. Yeah, so now we have to make hypothesis that if we are given k odd integer, their sum is equal to k square. So 1 plus 3 plus 5 up till 2k minus 1, their sum is equal to k square. So we have to now show it for k plus 1th odd integer. K plus 1th odd integer. So p of k ये हमारा hypothesis हो गया. We have to show it for p of k plus 1. Again we need to use the information of hypothesis. So अगर hypothesis हमारा है कि first k odd integer their sum is k square, तो अगर हम इसमें k plus 1th odd integer add कर लेते हैं, so that is 2k minus 1 से next जो odd integer होगा, so gap of two odd integers के दरमियान gap 2 का होता है 2k minus 1. So plus 2 करें तो we will get 2k minus 1 plus 2, which is 2k plus 1. So k plus 1 odd integer is 2k plus 1. इसमें से जो पहले k odd integer है उनका सम हमें hypothesis से मालूम है, that is k square. So this become k square plus 2k plus 1. So that is a complete square. K square plus 2k plus 1 is just like a square plus 2ab plus b square, a plus b whole square. So जहाँ पे a की वैल्यू k है और b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है. So k square plus 2k plus 1, it's a complete square of k plus 1 whole square. And then that's what we needed to show कि k plus 1 odd integer का sum हमारे पास k plus 1 square होगा. n is equal to k plus 1. So if we have n odd integer, their sum is equal to n square. So if it is valid for p of k implies p of k plus 1, then it means that our result is generalized. It is true for any value of n. इसके बाद हमने ये एग्जांपल्स थी इक्वालिटी की कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देन वी डिड वन एग्जांपल अबाउट इनइक्वालिटी. सो इनइक्वालिटी में जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि if right hand side is less than left hand side, so उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मजीद बड़ा कर देते हैं, उसमें कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी चीज़ ऐड कर देते हैं, तो it is still valid. And if left hand side is smaller, if we make left hand side more smaller, so it will be still valid. So इसमें ये प्रॉपर्टी inequality की प्लीज याद रखिए. So always remember this thing that if A is less than B and B is less than C, so we can say that A is less than B, A is less than C, sorry. तो अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है तो obviously A जो है C से भी छोटा होगा. So we often use this property in our proofs of inequality. कि एक चीज़ अगर आपकी left hand side right hand से छोटी है और जो right hand side it's further smaller than some other thing. So जो आपकी शुरू वाली चीज़ है जिसको हम A कह रहे हैं, so A should be less than that bigger thing which is over here, it's mentioned as C. So if A is less than B and B is less than C, well, then we can say A is also less than C. So obviously A is less than B, B is less than C, so A should be less than C. It's just like if you have weights, one is 2 kilograms, so we say 2 kilograms is less than 5 kilograms, and we say 5 kilograms is less than 8 kilograms. So it means 2 kilograms is less than 8 kilograms. So things like this. So these kind of things we often use in our inequalities.
inequality proofs. So let's prove this thing. N is less than 2 raised power n for all positive integers n. So base case positive integer हमारे पास पहला positive integer n is equal to 1 है. So left hand side is 1 and right hand side is 2 raised power 1. So obviously 1 is less than 2. So base case is true. So we make hypothesis. Suppose the claim this inequality is true for n is equal to k. So k is less than 2 raised power k. Fine. So now we need to show that the claim is also valid for n is equal to k plus 1. So we make inductive step. So let us show that the expression inequality, it is true for n is equal to k plus 1. So we take left hand side as k plus 1. So we have to reach to right hand side. Right hand side पे क्या है 2 raised per n और n की वैल्यू हमारे पास k plus 1 है. So eventually right side पे हमारे पास we need 2 raised per k plus 1. We have to show that k plus 1 is less than 2 raised per k plus 1. So हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो रहे हैं k plus 1. इसमें हमें हाइपोथेसिस से ये चीज पता है कि k is less than 2 raised per k. We need power of 2. So obviously to reach to our result we need some power of 2. So 2 raised per k हमें पता है k is less than 2 raised per k from hypothesis. So we should use this information of hypothesis. So k को अगर हम 2 raised per k से replace कर दें तो k plus 1 should become less than 2 raised per k plus 1. In other words, just hypothesis में inequality के दोनों साइड पे आप plus 1 को ऐड कर लें. So k plus 1 is less than 2 raised per k plus 1. So this becomes k plus 1. k को हमने 2 raised per k से replace किया. So k plus 1 is less than 2 raised per k plus 1. So k की जगह हमने एक बड़ी चीज रखी तो expression बड़ा हो गया 2 raised per k plus 1. Now what we need is कि 2 raised to power k plus 1 हो, 2 की पावर में k plus 1 हो, जबकि हमारे पास 2 की पावर में k है. So we replace 1. हमें ये plus 1 वाली चीज इस तरह नहीं चाहिए. So हम 1 को किसी बड़ी चीज से replace करते हैं. We replace 1 by even a bigger thing. So 1 को हम replace करें plus 2 raised power k से. 2 raised per k से हम इसलिए ऐड करें because we need 2 raised per k plus 1. हमें पावर में वो चीज चाहिए. So 1 is less than 2 raised per k. So हमने जब रिप्लेस की एक बड़ी चीज से, so हमारी जो मेन एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का था k plus 1, it is still smaller than this new expression of 2 raised per k plus 2 raised per k. So it's just like जो हमने अभी ऊपर किया कि if a is less than b and b is less than c, then a is less than c. तो a हमारे पास k plus 1 था, b हमारे पास 2 raised per k और उसके बाद साइड पे plus 1 हो रहा था. अब plus 1 की जगह हम 2 raised per k एक बड़ी चीज ऐड कर रहे हैं. So 2 raised per k plus 1 is less than 2 raised per k plus 2 raised per k. So it means k plus 1 is less than 2 raised per k plus 2 raised per k. So k plus 1 is less than 2 raised per k plus 2 raised per k. 2 raised per k plus 2 raised per k. So दो चीजें एक सी ऐड हो रही हैं. So we can write it down as 2 times 2 raised per k. अब basis same है, so powers can be added. Multiplication हो रही है, so we can add the powers. So it becomes 2 raised per k plus 1. So left hand side k plus 1 is less than 2 raised per k plus 1. K plus 1 is less than 2 raised per k plus 1, and that is what we needed. K n is less than 2 raised per n for n is equal to k plus 1. n की वैल्यू k plus 1 के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन वैलिड है. k plus 1 is less than 2 raised per k plus 1. इसमें जो सबसे क्रूशियल स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, दो स्टेप्स. एक तो हमने हाइपोथेसिस को यूज किया, k की जगह 2 raised per k यूज कर लिया, और दूसरा ये कि जो हमारे पास plus 1 है, we have to manipulate this expression towards our desired result. और मैनिपुलेशन में हम कोई मैथमेटिकल रूल वायोलेट नहीं करेंगे. We will follow all logical mathematical correct steps. So हम 1 is less than 2 raised per k. So हम अगर 1 को 2 raised per k से रिप्लेस करते हैं, एक्सप्रेशन हमारा मजीद बड़ा हो जाएगा. That's fine. So it means कि जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए जहां तक हम पहुंचे वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड k plus 1 से बड़ा ही है. So nothing is like inequality की जो प्रॉपर्टीज है, कोई प्रॉपर्टी वायोलेट नहीं होती. So this was one example of inequality. Let's do one more example. So use mathematical induction to prove that 2 raised per n is less than n factorial.
for every integer n with n greater than equal to 4. So यहाँ पे हमारा डोमेन सेट n is equal to 4 से स्टार्ट हो रहा है, any integer greater than equal to 4. So हमारे जो बेस केस होगा वो n is equal to 4 से स्टार्ट होगा. So please be careful, n is equal to 1 से हम बेस केस इस प्रॉब्लम में नहीं लेंगे. So for n is equal to 1, 2, 3, we can see that this claim is not true. This claim is true when n is greater than or equal to 4. So हमारा बेस केस 4 से स्टार्ट होगा, because हमारा डोमेन सेट स्टार्ट ही 4 से हो रहा है. So let's see the base case. Left hand side is 2 raised to power 4, which is 16, and right hand side is 4 factorial. So 4 factorial is equal to 24. Obviously 16 is less than 24. So this base case is true. Our expression is true for the base case. हमारा जो डोमेन सेट की पहली वैल्यू है उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन दुरुस्त है. हम हाइपोथेसिस बनाते हैं. We assume, suppose that our expression, given expression 2 raised to power n is less than n factorial. This expression, it is true for certain value of n, let's call n is equal to k. So 2 raised to power k is less than k factorial. 2 raised to power k is less than k factorial. So if this claim is true, this hypothesis is true, then we have to show that the claim is true for n is equal to k plus 1 as well. So in our inductive step, let's show that. So our hypothesis 2 raised to power k is less than k factorial. So inductive step for n is equal to k plus 1. So we start from the left hand side. 2 raised to power k plus 1. 2 raised to power k plus 1. So we can split the powers. So it becomes 2 into 2 raised to power k. Split क्यों कह रहे हैं? Because we need 2 raised to power k of hypothesis. इसमें से हमें extract करना है 2 raised to power k. उसकी information हमें hypothesis से given है कि 2 raised to power k is less than k factorial. So 2 raised to power k plus 1 को हम लिख लेते हैं 2 times 2 raised to power k. 2 raised to power 1 times 2 raised to power k. But we know from hypothesis 2 raised to power k is less than k factorial. So अगर हम 2 raised to power k को replace करते हैं k factorial से, this will become less than 2 times k factorial. So 2 raised to power k plus 1, which is 2 times 2 raised to power k. This is less than 2 times k factorial from hypothesis. 2 raised to power k is less than k factorial. So हमें चाहिए क्या? हमें राइट हैंड साइड पे k plus 1 factorial चाहिए. जहाँ पे हमारे पास क्या है 2 times k factorial. We know k plus 1 factorial is k plus 1 times k factorial. So अगर हमारे पास 2 की जगह k plus 1 हो, then we are done. हमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. And we know कि minimum value of k could be 4. हमें given था कि हमारा जो डोमेन सेट है इसमें n is greater than equal to 4. So k की minimum value हमारे पास 4 हो सकती है. तो k plus 1 की minimum value is 5. So 5 is obviously greater than 2. So we can safely replace 2 by k plus 1. 2 is less than k plus 1. So we replace 2 by k plus 1. हमने एक बड़ी चीज से रिप्लेस कर दिया. So inequality valid रहेगी. So 2 times k factorial is less than k plus 1 times k factorial. K plus 1 times k factorial. So we can write it down. K plus 1 factorial. So 2 raised to power k plus 1 is less than k plus 1 factorial. So it is valid for n is equal to k plus 1. Our given expression 2 raised to power n is less than n factorial. So this expression is valid for n is equal to k plus 1. So hence the statement is correct. Given statement is correct. Let's do next example. So next example is about divisibility. Divisibility, so we have to show कि 5 divides n is per 5 minus n. 5 divides n is per 5 minus n. So यहाँ पे please ये notation हमने पहले भी discuss की थी. Be careful for this notation, not to forget. जो vertical bar का symbol है, it means divides. इसका मतलब है कि जो दूसरी टर्म है वो पहली टर्म से पूरी डिवाइड हो रही है. So ये नोटेशन प्लीज याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट.
So 5 divides n is per 5 minus n. So remember a divides b, it means कि जो vertical bar का symbol इसको हम पढ़ते हैं divides, a divides b. So a b को a divides b completely. So जो चीज divide हो रही है वो b है, आपका divisor a है, जो चीज divide हो रही है dividend that is b, जो चीज डिवाइड करी है वो a है, तो जिसको हम b ओवर a लिखते हैं, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसको हम लिख सकते हैं a वर्टिकल बार b, a डिवाइड्स b. So in other words we can say कि b is a multiple of a, b a का मल्टीपल है, so that's why a b को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है. इसको जैसे आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं कि b रिमाइंडर a is equal to 0, कि b को अगर a से डिवाइड करें आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है, कुछ पूरा डिवाइड हो जाता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर इज 0. सो b रिमाइंडर a इज इक्वल टू 0. ये जो हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं इसका मैथमेटिकली लिखने का तरीका है a डिवाइड्स b. सो जैसे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड्स 12, 3 12 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट के 7 डिवाइड्स 8, 7 डिवाइड्स 28, 7 28 को पूरा डिवाइड कर देते हैं. सो बी केयरफुल, a डिवाइड्स b इज नॉट द सेम एज a डिवाइडेड बाय b. सो a डिवाइडेड बाय b, ये जो बैक स्लैश का सिंबल है, स्लैश बैक स्लैश नहीं, ये स्लैश a स्लैश b, a डिवाइडेड बाय b, इसमें a डिवाइड हो रहा है b से, और हमें नहीं पता वो पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता, लेकिन ये जो a डिवाइड्स b का सिंबल है, इट इज टेलिंग अस के a b को डिवाइड कर रहा है, जो चीज डिवाइड हो रही है, जो चीज बड़ी है वो b है, और वो पूरा डिवाइड कर रहा है, कोई चीज रिमाइंडर नहीं बचती. इन अदर वर्ड्स b इज ए मल्टीपल ऑफ a. b को हम लिख सकते हैं b टाइम्स a, b इज इक्वल टू a टाइम्स समथिंग, a टाइम्स q, q इज क्वेश्चन, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचता. So our statement is n is per 5 minus n. It is divisible by 5. 5 divides n is per 5 minus n completely. ये हमने show करना है. So again we start with the base case. So let n is equal to 1 for positive integers. N belong to natural numbers. So let n is equal to 1. So 1 is per 5 minus 1. N is per 5 minus n. So 1 is per 5 minus 1. 1 minus 1 is 0. So 0 is divisible by 5. 0 is divisible by any number except itself, of course. वो undefined आ जाते हैं. 0 is divisible by 1. 0 is divisible by 2. 0 is divisible by 3. 0 is divisible by any number. So 0 हमारे पास आ गया. 0 is divisible by 5. अगर आप चाहें तो next value n is equal to 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं. 2 raised per 5 is 32 and minus 2. So 32 minus 2 is 30. So 30 is divisible by 5. 5 divides 30. So base case is true. So let's make hypothesis that our claim is true for n is equal to k. So 5 divides k raised per 5 minus k. K raised per 5 minus k 5 से पूरा divide हो जाता है. In other words, we can say k में 5 k raised per 5 minus k is a multiple of 5. 5 divides k raised per 5 minus k. So अगर तो ये hypothesis true है, then we need to show that the claim is true for n is equal to k plus 1. So that would be k plus 1 raised per 5 minus k plus 1. We have to show that this is divisible by 5. So we can write down k raised per 5 minus k as multiple of 5. 5 times m. So m is some integer. So k raised per 5 minus k is a multiple of m. This is our hypothesis. And inductive step is k plus 1 raised per 5 minus k plus 1. n is per 5 minus n. k plus 1 raised per 5 इसको हम expand कर सकते हैं. Binomial expansion हमने counting में हम पढ़ चुके हैं binomial theorem. So k plus 1 raised per 5 will be k raised per 5 plus 5 k raised per 4 plus 10 k raised per 3 plus 10 k raised per 2 plus 5 raised per k plus 1, or minus k plus 1 था. So when we open the brackets it became minus k minus 1. 1 और 1 तो आपस में cancel out हो गए. यहाँ पे हम मान दो we can do 5k और minus k, ये 4k हो सकता है, लेकिन it will not serve our purpose.
इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास हाइपोथेसिस में k raised to 5 minus k given है which is equal to 5m. So we will use this information k raised to 5 और जो माइनस k है इसको हम कंबाइन कर लेते हैं. k raised to 5 minus k इधर आ गया. So 5k raised to 4 plus 10k cube plus 10k square plus 5k ये यहाँ पे आ गया. So k raised to 5 minus k from hypothesis we know this is equal to 5m. So we replace it by 5m. So we get 5m plus 5k, 4 plus 10k cube plus 10k square plus 5k, and then we can take 5 as common. 5 हमारे पास common multiple आ गया. So this is m plus k4 plus 2k cube plus 2k square plus k some expression. So 5 times something. So it means जो हमारा expression है k plus 1 is for 5 minus k plus 1. It is a multiple of 5. And this is what we are going to show. K n raised per 5 minus n, it is divisible by 5. 5 divides n raised per 5 n raised per 5 minus n. 5 divides this expression completely. So if it is true for k, it is also true for k plus 1. So it means it's true for any positive integer n. इसी की एक और एग्जांपल करते हैं. Actually, this example is very much similar to the first one. So instead of 5, we have 3. So that n cube minus n is divisible by 3, where n is a positive integer. So it's exactly the same example. Just हमारे पास number n की जगह 5 हो गया. जो हमारे पास power थी 5, उसकी जगह अब 3 हो गया. So let's do the base case. Base case n is equal to 1. So 1 cube minus 1 is equal to 0. So 0 is divisible by 3, that's true. If you want to check for next value, n is equal to 2. So we see 2 raised by 3 is 8 and minus 2. So 8 minus 2 is 6. 6 is divisible by 3, that's true. Suppose our expression n cube minus n, suppose it is true for n is equal to k, that it is divisible by 3. So it means 3 divides k cube minus k. k cube minus k 3 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं. k cube minus k 3 का मल्टीपल है. So we can write down k cube minus k is equal to 3 times a रख लें, x रख लें, m रख लें, 3 का मल्टीपल है. k cube minus k is a multiple of 3 is equal to 3 times a. So now we need to show if the statement is true for k, then it is also true for k plus 1. P of k implies P of k plus 1. Let's show it. So for n is equal to k plus 1, so we replace n by k plus 1. So we get k plus 1 cube minus k plus 1. K plus 1 cube minus k plus 1. Again, k plus 1 cube, it can be expanded using binomial expansion. या हमें पता है a plus b cube का फार्मूला हमें मालूम है. So k plus 1 cube is equal to k cube plus 3k square plus 3k plus 1. और उसके बाद हमारे पास minus k plus 1 आ रहा है. So minus k plus 1, if we open the brackets, is minus k minus 1. So 1 and minus 1, they are cancel out. Again, be careful not to do 3k minus k, which is 2k. Like it will not serve our purpose. We need this information of hypothesis. K cube minus k is equal to 3a. So ये information इसको आप lose ना करें. We have to use this information, and we see over here that k cube minus k is there. So we separate k cube minus k, and rest of the terms are 3k square plus 3k, and these follows after k cube minus k. हमें hypothesis से मालूम है कि k cube minus k is equal to 3 times a. So we can just write down 3 times a, 3 times a, और उसके बाद हमारे पास बाकी जो चीज़ है 3k square plus 3k आ गया. 3 times a plus 3k square plus 3 times k. So इन तमाम में 3 common आ रहा है. So it's multiple of 3. We take 3 as common multiple. So 3 is equal to a plus k square plus k. So it's 3 times something. So it means k plus 1 cube minus k plus 1. So that is a multiple of 3. So 3 इसको पूरा divide करते हैं. 3 divides k plus 1 cube minus k plus 1 completely. So hence the given expression is true with n is equal to k plus 1. So that's
So it means our given expression is always true. NQ minus N is divisible by 3. So that is true. That's सर लास्ट वाली लाइन जरा दोबारा बता दीजिएगा तो uh, जहाँ पर uh, 3 इंटू ए प्लस के स्क्वेयर प्लस के यहाँ तक ठीक है इससे नेक्स्ट so KQ minus K plus 3K square plus 3K. So KQ minus K, it is given in hypothesis. KQ minus K is equal to 3 times A. So KQ minus K is replaced by 3A. So we get 3A plus 3K square. उस तरह आ गया plus 3K. So तीनों terms में 3 common आ रहा है. 3 we can take it as common multiple. So it is 3 times A plus K square plus K. So it's a multiple of 3. So that is what that's what we needed to prove. हमें यही शो करना था कि जो given expression है it's multiple of 3 for n is equal to k plus 1. So 3 का multiple आ रहा है, so it means it's 3 divides the given expression completely. 3 times something आ गया. So 3 divides k plus 1 cube minus k plus 1. So the given expression is true for n is equal to k plus 1. So अगर p of k true था कि expression आपका n is equal to k के लिए दुरुस्त था और फिर हमने शो किया कि ये k plus 1 के लिए भी दुरुस्त है. So it means it is always true. It is true for all values of n. So this was about divisibility. We can do some more example. So this is okay. Let's do another example of divisibility. So claim is 2 raised per n plus 1. It is divisible by 3 for all odd integers n. हमारे पास अब n जो है वो odd integers हैं. So 2 raised by n plus 1, it is divisible by 3. So again we will do the same, follow same steps, base case, hypothesis, and then inductive step. So base case हमारे पास n is equal to like हमारे पास पहले odd integer n is equal to 1 है. So it means 2 raised per 1 plus 1, it should be divisible by 3. So 2 raised per 1 plus 1 is equal to 3. So 3 is divisible by 3, of course. So 3 divides 3. अगर आप second value के लिए भी check करें, when n is equal to let's suppose n next odd integer 1 के बाद क्या होगा 3. So 2 raised by 3 is 8. 8 plus 1 is 9. So 9 is also divisible by 3. So यहाँ पे we have to be careful. अभी हमारा domain set odd integers है. So अगर हम एक odd integer लेते हैं तो उससे अगला हमारे पास odd integer 2 के गैप से होगा, एक के गैप से नहीं होगा. ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर्स के दरमियान गैप 2 का होता है. सो अगर हमारा पहला ऑड इंटीजर 1 है तो अगला ऑड इंटीजर हमारे पास 3 होगा, उससे अगला ऑड इंटीजर 5 होगा एंड सो ऑन. सो फॉर बेस केस आवर क्लेम इज ट्रू. n is equal to 1, so 2 raised by 1 plus 1 is equal to 3, and this is divisible by 3. Let's make hypothesis. Suppose the claim is true for some certain value k, n is equal to k. So that means 3 divides 2 raised to power k plus 1. Certain value of n where k is odd. So यहाँ पे हमें ये चीज keep in mind where k is odd. So suppose the claim is true for certain value n is equal to k, where k is an odd number. So 3 divides 2 raised to power k plus 1. So we can write down 2 raised to power k plus 1. It is a multiple of 3. 3 times m. So if this hypothesis is true, then we have to make inductive step that claim is true for the next value of n as well. So we need to show that the claim is true for next odd integer. अगर k हमारा odd integer था तो इससे अगला odd integer हमारे पास k plus 2 होना चाहिए. यहाँ पे हम k plus 1 नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप k plus 1 करेंगे, k odd integer है तो k plus 1 even हो जाएगा. So that will it will not serve our purpose. We will go in the wrong direction. हमारा domain set odd integer का है. So अगर आपके पास odd integer k है तो उससे अगला odd integer हमारे पास 2 के गैप से होगा. It is k plus 2. So n is equal to k plus 2. So we need to show that the claim is true for next odd integer k plus 2. So let's take 2 raised to power n plus 1. So n की वैल्यू हमारे पास k plus 2 आ गई. So 2 raised to power k plus 2 plus 1.
2 रेज़ पर k प्लस 2 प्लस 1, हमें हाइपोथेसिस में जो चीज गिवन है वो 2 रेज़ पर k प्लस 1 है, जब हमारे पास 2 रेज़ पर k प्लस 2 है, सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट 2 रेज़ पर k फ्रॉम हियर, ताकि हम हाइपोथेसिस की इंफॉर्मेशन जो हमने वहां पे सपोज किया था उसको यूज कर सकें। सो 2 रेज़ पर k प्लस 2, इसको हम पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन एज 2 रेज़ पर k टाइम्स 2 रेज़ पर 2। So 2 raised per k times 2 raised per 2 और plus 1 उसी तरह आ गया। 2 raised per 2, this can be written as 4. So 4 times 2 raised per k. 4 times 2 raised per k plus 1. Still we cannot use hypothesis information. Hypothesis में क्या था, 2 raised per k और फिर plus 1 हो रहा था, जहाँ पे हमारे पास है 4 times 2 raised per k plus 1। अब यहाँ पे आप 2 raised per k को 4 से भी हम अलग नहीं कर सकते, 2 raised per k 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस एडिशन से ज्यादा होती है। सो 4 टाइम्स 2 raised per k ये अलग है और प्लस 1 2 raised per k से अलग है। सो अभी हम हाइपोथेसिस को यूज नहीं कर सकते, वी नीड टू मैनिपुलेट समथिंग। लेट्स राइट ऑन 4 एज 3 प्लस 1। 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, and then it is multiplied by 2 raised per k. So 3 plus 1 times 2 raised per k. So a distributive law, so it becomes 3 times 2k plus 1 times 2k. So 3 times 2k plus 1 times 2k और फिर plus 1 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम हाइपोथेसिस यूज कर सकते हैं कि अब हमारे पास 2 raised per k plus 1 ये अलग से आ गया, नो इट्स नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग। हमारे पास हाइपोथेसिस में यही था कि 2 raised per k plus 1 is equal to 3 times m. So we can write it down 2 raised per k plus 1 as 3 times m. So 3 times 2 raised per k plus 2 raised per k plus 1, इसको हमने अलग ब्रैकेट में कर दिया। So we are choosing it from hypothesis. So okay, so from hypothesis we know this thing is equal to 3m. In hypothesis 2 raised per k plus 1 is equal to 3m. So 3 times 2 raised per k, इसको ऐसे ही रहने दें, 2 raised per k plus 1. So this is replaced by 3m. So हमारे पास दो टर्म्स हैं एडिशन में, पहली टर्म है 3 times 2 raised per k, दूसरी टर्म है 3 times m. So we can take 3 as common, common multiple आ गया 3 times 2 raised per k plus m. So it is a multiple of 3, 3 से multiply हो रहा है ना, अंदर जो भी चीज है 2 raised per k plus 1, it is getting multiplied by 3. So this is a multiple of 3. So it means our given expression 2 raised per k plus 2 plus 1, it is divisible by 3. ये 3 का multiple है तो 3 से divide हो सकता है. So we can write it down 3 divides 2 raised per k plus 2 plus 1. So इससे ये divide हो गया. So it means 2 raised per n plus 1 is divisible by 3 for all odd integers n. 2 raised per n हमने k के लिए suppose किया और फिर k plus 2 के लिए अगले odd integer के लिए हमने show कर लिया. So it means it is divisible by all odd integers of it is divisible by 3 for all odd integers of n. So the expression is valid. So this was maybe the last example that we do. I have number of examples here, so you can practice by yourself. Mainly हमने तीन तरह के problems किए हैं. पहले problems थे equality के, इस तरह के left hand side is equal to right hand side. So आप left hand side base case show करते हैं, and after that you show it for you use hypothesis, we make hypothesis, and based on hypothesis we use it for k plus 1 inductive step. Hypothesis n is equal to k के लिए true है, then inductive step that it should be true for k plus 1 as well. So left hand side से start होके right hand side तक हम पहुंचते हैं. So I have listed a number of examples here. Actually these examples are from ये जो screenshots वाली examples हैं, these are examples from FSC book. So these I have taken these examples from your first year FSC या ICS की बुक. So ये इक्वालिटी की एग्जांपल है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं और यू हैव टू शो इट that summation is equal to that closed form expression on the right hand side. Sometimes the expression becomes quite tedious, like जैसे यहाँ पे आपको तीसरे चौथे पांचवें लाइन पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें नजर आ रहे हैं.
these are 8 9 10 problem. So उसमें it becomes hard कि लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर कैसे करें. तो उसमें आप कर सकते हैं कि you can start from both sides, left hand side and right hand side, and then you have to show that these two sides turn out to be equal. So दोनों sides को simplify करें and then you can show that these become equal. फिर हमने divisibility के problem किए कि given expression is divisible by some number or it could be divisible by some other expression. So again उस तरह base case, hypothesis और inductive step हमें show करने हैं. And then there are problems of inequality, that given expression uh, is greater than or less than some other expression, like जहाँ पे n factorial is greater than 2 raised to n minus 1. Be careful about the domain set. जहाँ पे greater than equal है तो फिर आपने जैसे n greater than equal to 4 है, you have to start from n is equal to 4. n is greater than 6 है, so it means आपने 6 नहीं लेना, you have to take n is equal to 7 as your base case. So be careful about the domain set जब आप base case लेते हैं. There are some more examples about equality and division, so I hope you can try, you can do it by yourself. You have to practice by yourself.